करुणायै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्ष्यै नमः ओम पद्मसुन्दर्यै ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादावमुक्षै नमः ओम प्रभायै नमः ओम चन्द्रायै नमः ओम चन्द्रवदनाय नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चन्द्ररूपाय नमः ओम इन्दिराय नमः ओम गिन्दिशीतलाय नमः ओम आह्लादजनन्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम शिवकरजै नमः ओम विश्वजनन्यै नमः ओम पुष्टये नमः ओम दारिद्र्यनाशन्यै नमः ओम प्रीतपुष्करिण्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्रवाल्याम्बराय नमः ओम श्रियै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम बिल्वलयाय नमः ओम परारोगाय नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धराय नमः ओम उदाराङ्गाय नमः ओम हरिण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकर्णे नमः ओम शुद्धये नमः ओम श्रेणसौम्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम नृपवेस्मिगदानन्दाय नमः ओम वरलक्ष्म्यै नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः ओम समुद्रतनयाय नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलाय नमः ओम देव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्षियै नमः ओम नारायणसमाश्रिताय नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः श्री वेंकटेश्वर प्राणलक्ष्म्यै नमः చెప్పండి ఈ 9 దారాలతో 9 దేవతల్ని ఆవాహన చేయటమే తోరణ గ్రంథి పూజ చేస్తున్నాం అందరూ చెప్పండి ఓం కమలాయై నమః ప్రథమగ్రంథిం పూజయామి రమాయై నమః ద్వితీయ గ్రంథం పూజయామి ఓం లోకమాత్రే నమః తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి ఓం విశ్వజనన్యై నమః చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః పంచమ గ్రంథిం పూజయామి ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయై నమః అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి ఓం చంద్రసహోదర్యై నమః అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి ఓం హరివల్లభాయై నమః నవమ గ్రంథిం పూజయామి ఇప్పుడు అమ్మవారికి ఈ యొక్క తోరణాన్ని సమర్పణ చేస్తాం. ఆ మంత్రాన్ని ముందు మనం పఠించుకుందాం. తర్వాత మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా దాన్ని ధరించుకుందరు. కానీ కాంక్షాదిక అభ్యుదయతాయి కణాక్షలేశే బద్ధాయ దైత్యజితురః కృత్య నిత్యవాసే భక్తి స్థిరేణ మనసా భవతీం ఉపాసే. கருணை, தாட்சிண்யம், ஔதாரியம் முதலிய குணங்களை உடையவள் இந்த தாயார். இவளின் கடைக்கண் பார்வையே போதுமானது. பக்தர்கள் வேண்டியதை தருவதோடு அல்லாது பக்த பக்க துணையாகவும் பக்தர்களுக்கு இவள் இருப்பவள். இந்த வரமகாலட்சுமி
ஸ்ரீ வெங்கடவனின் திருமார்பில் உறுதியாக நித்தியவாசம் செய்யும் இவளை சரண் அடைந்து சகல மங்கள பலன்களையும் என் அந்நாளில் பெற்று மகிழலாம். மஞ்சள், குங்குமம் போன்ற தெய்வீக சோபையை பெற்றவளாக எந்த பக்தன் லக்ஷ்மியை தியானம் செய்கிறானோ, திக்குகளுக்கு அதிபதியான குபேரன் போன்றவர்களின் செல்வத்தை அவன் அந்த பக்தன் நிச்சயமாக அடைவான். இந்த கருத்தை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சகஸ்ரம் மங்கள ஸ்தபகத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தை நன்றாக விவரித்து அருளி செய்து உள்ளது. கன்யே புக்தோ தன்வதக தாவகீனம் மன்யே ரூப் மங்களம் மங்களானாம் யத்சா வர்ணிய பிராப்த பத்ரா ஹரித்தா சௌமங்கல்யம் சம்பித்தே விதூராம் என்று ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை லக்ஷ்மி மங்களமான திருப்பார்கடலில் தோன்றினவள். மங்களகரமான உயர்ந்த பலன்களையே அளிப்பவளாக திகழ்கின்றாள். இன்றளவும் மஞ்சள், குங்குமம் முதலான மங்கள பொருள்களுக்கு இவளின் மங்கள கடாட்ச வீட்சணத்தாலே மங்களத்தை பெறுகின்றன. அப்படிப்பட்டவள் இந்த மங்கள லக்ஷ்மி வரமகாலட்சுமி. ஆகவே மஞ்சள் சுமங்கலிகளின் பிரிய வஸ்துவாக அமைகின்றது. சுமங்கலத்தை தன்மையை நன்றாக வளர்க்கின்றது. எனவே